Okay, so let us start with the next chapter, that is about kinetic theory of gases and radiation. So basically, this chapter is, as we know already, is divided into two parts. The first part takes care of the kinetic theory of gases, and the second part, as we can expect, takes care of the radiation part, right? तो अभी इसमें देखो कि जहाँ तक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सवाल है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे कंसेप्ट हमको स्टडी करने हैं. विल स्टडी दिस चैप्टर इन टू डिफरेंट पार्ट्स ओनली. एमसीक्यूज भी हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एमसीक्यूज सेपरेट करेंगे, और उसके बाद फिर जो रेडिएशन के जो एमसीक्यूज है वो सेपरेट करेंगे. सो लेट अस सी. ओके, सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमको जो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो है ideal gas equation and its applications. As we already know that the ideal gas equation is valid for any gas at high temperature and low pressure. Okay, remember high temperature और low pressure पे ideal gas equation ओबे किया जाता है सभी गैसेस के द्वारा. ठीक है, उसका रीजन ये है कि एट लो प्रेशर लो टेम्परेचर, ठीक है, अगर लो टेम्परेचर में रखेंगे तो क्या होगा कि गैस विल जस्ट टेंड टू लिक्विफाई, इट विल बिकम अ लिक्विड at below a particular temperature. If the temperature falls below the boiling point of the liquid, then it will just become a liquid, and in that case it will not obey the ideal gas equation. Okay, and दूसरी बात कि अगर हाई प्रेशर अगर रखेंगे, इफ यू कीप द गैस एट हाई प्रेशर, अगर प्रेशराइज करेंगे उसको, तो प्रेशराइज करने के बाद भी क्या बनेगा, तुमको पता होगा कि प्रेशराइज करने के बाद की वजह से भी गैस जो है वो लिक्विड बनता है. सो अगेन इट विल टेंडिंग टू बिकम लिक्विड, एंड दैट्स व्हाई इट विल नॉट ओबे द गैस लॉज, और इन फैक्ट इन शॉर्ट आइडियल गैस इक्वेशन इन एनी ऑफ दिस केसेस. तो ये दोनों केसेस जो है वो अनफेवरेबल केसेस है जहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन यूज नहीं होता है. ओके, बट आइडियल गैस इक्वेशन इज यूज्ड और ओबेड ओनली at these conditions by any gas. Okay, high temperature or low pressure. Yes, तो ये अच्छी तरह से याद रखना है हमको. चलो ठीक है, once we understand this, we can say this ideal gas equation, which is simply PV is equal to nRT. अब देखो इसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं आइडियल गैस इक्वेशन के. तो जैसे कि PV इक्वल टू nRT, इसके अंदर ये तीन वेरिएबल्स जो है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको स्टेट वेरिएबल्स कहा जाता है. P is the pressure, V is the volume, and T is going to be a temperature, absolute temperature. Don't forget that. So these three variables are called as state variables because these three variables only constitute a state of the gas. If we imagine this pressure, volume, and temperature to be the x-axis plotted along x-axis, y-axis, and z-axis. Suppose हमने x-axis पे pressure plot किया, y-axis पे volume plot किया, और z-axis पे suppose temperature plot किया, तो हमको इस पूरे space के अंदर जितने भी सारे points है, points, so every point will have some coordinate like P1, V1, T1 here. And suppose there is another point B which is having the coordinates like P2, V2, and T2 as well. So whenever a gas is taken from one point to another point by any path, doesn't matter, किसी भी path से लेके जाओ, कोई सा भी path choose करो, it doesn't matter. But at these 2 points, if this gas is present at this point at A here, then the ratio of P1, V1 upon T1 will remain same as the ratio of the coordinates
at this point here, that is T2 V2 upon T2 here. If again we take this gas at another point whose coordinates are like C, that point is C, whose coordinates are like P3, V3, T3 respectively, then we can expect that the value of P3, V3 upon T3 will also match with these two values. So this is a very big fact, actually very deep fact about the gas. तो ये जो fact है, इसको हम कितने भी points के लिए apply कर सकते हैं. So far as the number of moles of the gas is remain constant. जब तक गैस के हम नंबर ऑफ मोल्स घटाते या बढ़ाते नहीं है, तब तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि the relationship between all these three, pressure, volume and temperature, will be always this, that the pressure, volume upon temperature remains constant always. So ये हम समझ सकते हैं आराम से. और इसी इक्वेशन के जो है अलग अलग पार्ट्स हम देख सकते हैं. जैसे कि अगर टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा, if suppose we take the gas from one point to other point by keeping the temperature constant, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ पे T कैंसिल हो जाएगा, and what we can expect is P1 V1 is equal to P2 V2, which is nothing but the Boyle's law. but उसके लिए क्या कंडीशन है, याद रखो ठीक से, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट. ओके, एंड ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स वो तो कांस्टेंट है, इधर ही कांस्टेंट है वो तो. नंबर ऑफ मोल्स जब तक कांस्टेंट है तो तभी हम ये सब अप्लाई कर सकते हैं. ओके, देन उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे कि P1 V1 equal to P2 V2, or even we can equate it with P3 V3 also in this way. And if suppose we and also remember that this can be treated as PV is equal to constant, and the graph between pressure and volume will be hyperbola like this. इस टाइप का ग्राफ हमको मिलेगा जो ना एक्स एक्सिस को टच करेगा कभी, ना वाई एक्सिस को टच करेगा कभी. तो इस टाइप का ग्राफ हमको मिलता है. These type of graphs are also called as the isotherms. Remember, because temperature is kept constant at that. That's why they are called as isotherms. And these graphs in the three-dimensional coordinate system, PVT system, they are always perpendicular to this temperature axis. देखो इस टाइप के ग्राफ्स हमको मिलते हैं, इस परपेंडिकुलर प्लेन में ये ग्राफ हमको मिलते हैं. याद रखेंगे ठीक से. ये अभी सपोज अगर हमने एक प्लेन ड्रॉ किया जो टेम्परेचर के एक्सिस को परपेंडिकुलर है, ऐसे सपोज, ठीक है. तो इस ग्राफ में ही, मतलब इस प्लेन में ही वो ग्राफ रहेगा. कितना भी हम प्रेशर वॉल्यूम उसका वेरी करेंगे तभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वो पूरा ग्राफ इस प्लेन में रहेगा. तो इसको हम बोलेंगे आइसोथर्म्स. रिमेंबर, दूसरी बात हम समझ सकते हैं कि अगर सपोज वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा है, so when volume is kept constant, what you can expect is pressure P1 upon T1 is going to be equal to P2 upon T2 when volume is kept constant. And obviously number of moles which is already constant. ठीक है, तो number of moles तो हमको constant रखने ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखेंगे तो तभी हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे the ratio of P to T remains constant, and that's why we can say that P upon T is constant, which can also be said that P is proportional to T when V is constant. और इसको हम कैसे लिख सकते थे, यहाँ पे P is inversely proportional to V और V is inversely proportional to P when T is constant. ठीक है, तो ये दूसरा लॉ हो गया. ठीक है, P is directly proportional to T when V is constant, and the graph between P and T will be a straight line passing through origin. If we are plotting the graph between pressure and absolute temperature, don't forget that absolute temperature, then the graph will be a straight line and positive slope with a positive slope like this. तो इस टाइप का ग्राफ हमको मिलेगा गैस के लिए, no doubt. And this graph is also called as a isochore. Why? Because volume is kept constant in this case. So when the volume is kept constant, the graph will be perpendicular to the volume axis. Okay, ये volume axis को perpendicular इस टाइप का ग्राफ हमको मिलेगा जरूर. This is called as isochore. And तीसरी चीज हम देख सकते हैं आराम से यहाँ पे कि अगर हमने, देखो ठीक से, अगर हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा
if we keep the pressure constant, then we can expect V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. Even it can be also written as V3 upon T3, but pressure is required to be constant, and obviously number of moles, which is already constant. Okay, तो number of moles के साथ साथ अगर pressure भी constant है, तो उस केस में हम expect कर सकते हैं the ratio of volume to absolute temperature will always remain constant. That means V upon T remains constant, which also means that V is directly proportional to T, which is nothing but the statement of Charles' law. And hence we can go also, this is the statement of Boyle's law, or this is the statement of Gay-Lussac's law, and this is going to be the statement of Charles' law. And the graph between volume and temperature will again be a straight line so far absolute temperature is concerned, and with the positive slope obviously, no doubt. तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं आराम से. चलो ठीक है, ये हमको अच्छी तरह समझना है. The ideal gas equation can be applied at any two states of the gas. If the gas changes or gas is converted from one state to another state, अगर यहाँ पे एक स्टेट है A है सपोज, और यहाँ से B स्टेट पे अगर ये गैस कन्वर्ट हो जाता है, किसी भी पाथ से लेके जाने दो, doesn't matter, it will always satisfy the relationship P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. Remember, this relationship will always be satisfied by the gas at any two states so far as number of moles is constant. Okay, I am repeating again and again that number of moles is going to be constant. Okay, but what will happen if number of moles is not constant? Check करो, अगर number of moles change होते हैं. Okay, सबसे पहली बात कि how can we change the number of moles? Okay, देखो pressure कैसे change करते हैं ये तुमको पता है, ठीक है. If suppose the gas is there in the cylinder, then we can say pressure can be changed by just applying some force on the piston, okay, or just reducing the force on the piston. Or if suppose we have kept some weight on the piston, then we can just increase that weight, automatically the pressure gets increased. And if suppose we take away from some weight from this above the piston here, then the pressure will be automatically reduced. Okay, and if suppose some process is going to take place at atmospheric pressure, मतलब open atmosphere के ऊपर अगर ये pressure कोई भी अगर process हो रहा है, तो that process will always be considered to be at constant pressure. Remember, अगर कोई दूसरा कोई pressure बाहर से हमने काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे atmospheric pressure काम कर रहा है already और वो constant है. तो ये हमको अच्छी तरह से समझना है. कोई भी pressure, दूसरा कोई pressure हो ना हो, atmospheric pressure हमेशा होता है. और अगर हम प्रेशर को कुछ नहीं करते हैं, तो बढ़ाते भी नहीं है और कम भी नहीं करते हैं, तो इसका मतलब प्रेशर almost remains constant, means by default remain constant, because atmospheric pressure is already acting on the systems. Remember. Okay, how can we change the volume? If suppose some gas is fitted into some container like this, and suppose we make it fill into another container whose volume is bigger like this. तो जैसे ही हम यहाँ पे इस कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, मतलब इस गैस को अगर हम सपोज इस कंटेनर के अंदर अगर जाने के लिए अलाउ करते हैं, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, तो इस तरह से वॉल्यूम इंक्रीज किया जा सकता है. या अगर सपोज कोई पिस्टन यहाँ पे रखा हुआ है और इस पिस्टन को अगर हम प्रेस करके अगर यहाँ से कैसे भी करके यहाँ पे तक लेके आते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया. तो इन दिस वे वी कैन चेंज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस. और इवन समटाइम्स लाइक ऐसा भी किया जाता है कि सपोज एक कंटेनर है और ये कंटेनर के दो कंपार्टमेंट्स हैं, इस तरह से दो कंपार्टमेंट्स है इस कंटेनर को, और सिर्फ एक ही कंटेनर कंपार्टमेंट में गैस भरा हुआ है, ठीक है, और दूसरे कंपार्टमेंट में वैक्यूम है, nothing is there already. So in that case, if suppose we just punch a hole in between these two compartments, इन दो कंपार्टमेंट्स के बीच में जो वॉल है, इस वॉल के अंदर अगर हम एक होल गिरा देते हैं, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि द गैस जस्ट स्टार्ट एस्केपिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस कंटेनर टू अनदर कंपार्टमेंट हियर. तो इस कंपार्टमेंट में इस कंपार्टमेंट पे ये गैस जाने लगता है, और जब ये गैस जाता है, एंड इफ द गैस इज फ्री टू मूव एनीवेयर इन दिस टू कंपार्टमेंट्स, दैट मींस द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस हैज बीन increased. If suppose both of these containers are identical, compartments are identical,
then we can say that the volume has been doubled, ऐसा हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये हो सकता है। तो वॉल्यूम चेंज करने का तरीका ये है इस तरह से। एंड टेम्परेचर चेंज करने का तरीका क्या है? ऑब्वियसली तुमको पता है ऑलरेडी कि इफ वी गिव द हीट टू द गैस then automatically the temperature of the gas will change, and if we keep it in the cool surroundings then automatically the temperature will get decreased। और इवन कभी कभी तो क्या होता है कि गैस को अगर हम सपोज सडनली प्रेशर अगर अप्लाई करते हैं तो सडन इंक्रीज इन प्रेशर ऑल्सो गिव राइज टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिमेंबर। सो टेम्परेचर बढ़ाने का एक और तरीका ये है कि सडन इंक्रीज इन द प्रेशर। तो प्रेशर को अगर हम सडनली इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। So accordingly, we can increase or decrease the temperature by either giving the heat or taking out some heat from the gas, or just suddenly pressurize the gas or suddenly decrease the pressure on the gas। Okay, तो इस तरह से टेम्परेचर को चेंज किया जा सकता है। तो देखो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों को चेंज कैसे करने का वो हमने देखा, ठीक है। बट अभी सपोज नंबर ऑफ मोल्स हमको चेंज करने हैं। जब तक कोई गैस किसी कंटेनर के अंदर, क्लोज्ड कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, तब तक नंबर ऑफ मोल्स चेंज होना पॉसिबल नहीं है। ये बात अच्छी तरह से नोट करो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स विल नेवर चेंज so far as the gas is filled in the container unless and until there is some reaction in the molecules of the gas। वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट जब तक कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट है और जब तक हमने इस कंटेनर के अंदर कोई भी नया एडिशनल गैस ऐड नहीं किया है या उसमें से कुछ गैस को बाहर जाने के लिए, एस्केप होने के लिए अलाउ नहीं किया है, तब तक नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, बिल्कुल। बट if we suppose punch a hole in this container and suppose that some gas just starts leaking out, अगर कुछ गैस इसमें से बाहर चला जाता है तो कुछ देर के लिए अगर हमने ये होल ओपन रखा और उसकी वजह से समझो कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर चले गए और उसके बाद अगर सपोज हमने ये होल वापस बंद कर दिया तो उस केस में हम बोल सकेंगे यहाँ पे कि the number of moles has been changed। okay, the number of moles has been decreased, ये हम समझ सकते हैं आराम से। या इवन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने एक बाहर से उस गैस को अगर प्रेशराइज करके अगर इसके अंदर इंजेक्ट किया, ठीक है, जैसे कोई वाटर पंप होता है, जैसे साइकिल के अंदर हवा भरने का जो पंप होता है, तो वो पंप यूज करके अगर हमने गैस को इंजेक्ट किया, अंदर की तरफ अगर प्रेस किया, जैसे साइकिल के टायर ट्यूब में जब हम हवा भरते हैं तो वो हवा भरते हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, वी आर पुशिंग द नंबर ऑफ मोल्स or pushing the extra gas or air inside the tire, and that's why the number of moles will obviously get increased। so this is the method to increase the number of moles। and even कभी कभी तो क्या होता है कि हमने बाहर से कोई molecules नहीं डाले, ठीक है, but suppose as we have just stated that this whole gas is composed of two compartments like this, and एक कंपार्टमेंट में मान लो कि H2 गैस भरा हुआ है, ठीक है, और दूसरे कंपार्टमेंट में सपोज O2 इतना गैस भरा हुआ है और उसके भी नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है। सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज समथिंग लाइक 3 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज सपोज लाइक 3 और सपोज 6। ओके, तो अभी इसमें होता क्या है ना कि अगर सपोज हम इसमें ये कंटेनर अगर ओपन कर देंगे, इसमें अगर बीच में अगर होल पंच करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही हमने होल पंच किया तो उसकी वजह से क्या होगा, एंड सपोज दैट दिस H2 and O2 react, they are allowed to react and chemical reaction takes place between these two, and suppose that all molecules of H2 are exposed to all molecules of O2 to form H2O, suppose that is vapors। अब ये चलो एक इमेजिनरी प्रोसेस है, इमेजिन करो इसको ठीक से। तो जस्ट फॉर द कंसेप्ट सेक वी कैन से दैट इफ सपोज ऑल दिस H2 molecules, अभी इसमें देखो लिमिटिंग रिएजेंट्स कौन है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिमिटिंग है क्योंकि कम है। इसमें जब रिएक्शन होगा तो H2 plus O2, actually 2H2 plus O2 will actually give 2H2O, ये रिएक्शन यहाँ पे बनेगा। इसकी वजह इससे हमको ये पता चल रहा है कि दो H2 के मॉलिक्यूल्स एक O2 के मॉलिक्यूल के साथ मिलके दो H2O के मॉलिक्यूल्स तैयार करेंगे, जिससे अभी यहाँ पे लेकिन हमारे पास H2 के कितने मॉलिक्यूल्स है, 3 है, और ऑक्सीजन के भले 6 है लेकिन उसका फायदा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स H2 के जो है वो रिएक्ट होंगे सिर्फ 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ।
और बनाएंगे फिर से 3 molecules of H2O, ओके। और ये 1.5 molecules of O2 जो है यूज हो गए 6 में से, तो बाकी जो 4.5 molecules है मोल्स है ऑक्सीजन के, वो बचे रहेंगे, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज द रिमाइंडर, ठीक है, एक्सेस रिएजेंट उसको बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर फाइनली हमको क्या मिलेगा, 3 moles of H2O एंड 4.5 moles of O2। दैट मींस टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने बन गए फाइनली, 3 plus 4.5 which is actually going to be 7.5। तो ये बन गया हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जबकि पहले कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट थे, ये देखो 3 plus 6 जो कि यहाँ पे 9 है। तो 9 नंबर ऑफ मोल्स पहले थे और अभी हमारे पास 7.5 नंबर ऑफ मोल्स है। इस तरह से अगर केमिकल रिएक्शन अगर हो जाता है तो उसकी वजह से भी नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकते हैं, याद रखो ठीक से। और अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं तो उस केस में आइडियल गैस इक्वेशन कैसे अप्लाई करना होता है, तो उसलिए याद रखो कि इन दैट केस वी हैव टू यूज PV is equal to nRT। that means we can say that PV upon NT remains constant। that means we can say P1V1 upon N1T1 is actually going to be equal to P2V2 upon N2T2। remember, that is the meaning of this PV upon NT is constant, okay। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने N1 और N2 लिया इधर, याद रखो ठीक से। और इस केस में फिर अभी जब नंबर ऑफ मोल्स अगर चेंज होते भी है तो हम अगर इक्वेशन यूज करेंगे तभी भी हमको फाइनल स्टेट, फाइनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स या कुछ भी मिल जाएगा, जो भी हमको चाहिए निकालना है तो वो मिल जाएगा आराम से। उसमें भी अगर सपोज वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जस्ट कैंसिल दिस वॉल्यूम आउट, और अगर सपोज प्रेशर कांस्टेंट है तो जस्ट कैंसिल दिस प्रेशर आउट from both sides, and if suppose temperature is constant, cancel out the temperature and get the result। or even suppose pressure and volume दोनों constants है, दोनों constant है, तो उस केस में just cancel करो pressure volume को, और we can expect N1T1 is equal to N2T2 as well in that case। if suppose number of moles and temperature are the only things to change, then we can say that the number of moles into temperature will remain constant in that case, okay। so these are the different applications of ideal gas equation, remember। and also we have to understand the mole triangle, which is the most important topic in this chapter actually, mole triangle। क्योंकि मोल जो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो साइमल्टेनियसली मास के साथ कनेक्टेड है। even it is also connected with the number of molecules of the gas, and also it is connected with the volume of the gas, okay। तो ये जो रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास ऑफ अ गैस is always constant, and that is going to be the number of moles। even the ratio of number of molecules in the gas upon the Avogadro's number, n naught मतलब क्या है यहाँ पे, Avogadro's number, that is also going to be constant। and ultimately the volume of gas upon molar volume at NTP, NTP या STP we can say। तो NTP पे वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ जो होता है गैस के द्वारा अपॉन द मोलर वॉल्यूम which is going to be 22.4 dm cube और लीटर कैन सी। तो दिस इज अ मोलर वॉल्यूम एंड एवोगाड्रोस नंबर तो तुमको पता है ऑलरेडी। एंड मोलर मास ऑफ द गैस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। सो अकॉर्डिंगली इफ वी नो द मोलर मास then we can, and suppose the number of moles is known, then immediately we can calculate the mass of the gas। if you know the number of moles and Avogadro's number is already known, we can immediately calculate the number of molecules in the gas। and if we know the molar volume and number of moles actually, then we can immediately calculate this volume occupied by the gas at NTP, remember, okay। so this is the application of the number of moles formula। तो ये जो number of moles का जो formula है तो उसके ये इतने सारे applications है, याद रखो ठीक से। we can calculate mass, number of moles and volume using number of moles, okay। there is a triangle called as the mole triangle, which is already you have learnt in the 11th standard textbook in some basic concepts, I think so। if suppose we have this number of moles here and we want to find out the mass of the gas,
ये देखो यहाँ पे मास है, इस तरफ नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और इस तरफ सपोज वॉल्यूम है। तो होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स से हम मास निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय मोलर मास, और मास से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग बाय द मोलर मास। इवन नंबर ऑफ मोल्स से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय Avogadro's number, and we can just return back and find out the number of moles if we know the number of molecules by just dividing by the Avogadro's number to obviously this number of molecules. Okay, and if we have the number of moles, then we can just get the volume occupied by the gas at NTP by just multiplying the number of moles by molar volume. And if we have the volume already, then we can find out the number of moles by just dividing this number volume by the molar volume here. Okay, so this is the application of mole triangle. For example, if we have this mass of the gas and we want to find out volume of the gas, volume occupied by the gas at STP or NTP, then we can just go via this route. तो ये हमको यहाँ पे ऐसे जाना होगा, सॉरी इस तरह से हमको यहाँ पे जाना होगा। तो मास से वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमको, we'll have to divide by molar mass and then multiplied by molar volume, then we get the volume of occupied by the gas at NTP if we know the mass of the gas. Even using this mass we can also find out the number of molecules. कैसे, तो उसके लिए हमको इस रूट से जाना होगा। देखो ठीक से, if we have the mass of the gas and we want the number of molecules of the gas, then first of all just divide that mass by molar mass of the gas and get number of moles first, and once we get the number of moles, just multiply it by number of Avogadro's number, so that we can get the number of molecules present in the gas. And finally, if we want number of molecules and we have the volume occupied by the gas, then we can just go via this route. That means what we have to do first, we have to divide by molar volume to the given volume and get the number of moles first, and once we get that, just multiply it by Avogadro's number so as to get the number of molecules in the gas. And even we can go by this route also. Number of molecules अगर हमको पता है और वॉल्यूम निकालना है तभी भी हम ये कर सकते हैं आराम से। इवन वॉल्यूम हमारे पास है, मास निकालना है, we can find it out. Number of molecules है, मास निकालना है, we can find out, no doubt. So this mole triangle is very useful in the numericals, even in chemistry also, and even in this part of this chapter also. Okay, so just remember this correctly. Yes. Next is about the concept of the mean free path and RMS velocity. ठीक है, RMS velocity of the gas. Mean free path का मतलब क्या होता है, तो ये हमको पता होना चाहिए. Mean free path is simply the distance, average distance traveled by the molecule of the gas between any two successive collisions. मतलब यहाँ पे suppose molecule है, तो suppose वो इस तरफ जाता है तो यहाँ पे collision करता है, फिर से यहाँ पे जाता है, फिर से यहाँ पे collision करता है, और इस तरह से zigzag order में, zigzag path में वो जाता रहता है. तो जितना भी वो डिस्टेंस दो कोलिजन्स के बीच में ट्रैवल कर रहा है, तो वो भले अलग अलग है, हर दो कोलिजन्स में डिस्टेंस वो अलग अलग ट्रैवल करेगा, बट एवरेज विल रिमेन कांस्टेंट, एंड दैट एवरेज वैल्यू विल बी कॉल्ड एज इट्स मीन फ्री पाथ, एंड इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय लैम्बडा. रिमेंबर, लैम्बडा इज नॉट द वेवलेंथ, actually it is the mean free path. So the wavelength, the mean free path of the molecule can be found out to be simply the total distance traveled by the molecule S, which is divided by the number of collisions made by the molecule this way. Even we can also simplify this further and get this as lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 so on up to lambda n, that is divided by number of molecules, the number of collisions. यहाँ पे n मतलब क्या है, number of collisions है, याद रखो ठीक से. Suppose number of collisions वो जो भी करता है
तो वो और जो भी टोटल पाथ जो ट्रेवल होता है हर कोलिजन के दौरान उसको अगर हम ऐड करते हैं, so this total will become the total distance traveled by the molecule in n collisions, which has to be divided by the number of collisions so as to get the mean free path. Remember, here we can prove that the mean free path is actually depends on certain factors which we are going to see in the next later in this chapter. So mean free path जो है वो एक तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डेंसिटी के ऊपर. जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना मीन फ्री पाथ कम होगा. सीधी बात. मतलब दिस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनवर्सली एंड वॉल्यूम डायरेक्टली. तो वॉल्यूम के ऊपर वो डायरेक्टली डिपेंड करता है बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर इनवर्सली डिपेंड करता है. इवन दिस मीन फ्री पाथ आल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनवर्सली. ठीक है, तो इनवर्सली इसके ऊपर डायमीटर के ऊपर इनवर्सली डिपेंड करता है mean free path, and also it depends on the temperature directly. As the temperature increases, the mean free path also increases. So we'll see later what does this all mean free path depends upon. And this second concept here is going to be the RMS velocity. First of all, you have to understand that what is the difference between the average velocity, or we can say mean velocity, and RMS velocity. Basically, mean velocity is nothing but the arithmetic mean of all the velocities. So C1 bar plus C2 bar plus C3 bar and so on up to Cn bar, and that is to be divided by number of molecules here. अब यहाँ पे n मतलब क्या है? Number of molecules है. Don't forget that. And his RMS velocity here can be obtained to be simply the square root of the sum average of the sum of average of the square of all the velocities of all the molecules. That is C1 square plus C2 square plus C3 square and so on up to Cn square, which has to be divided by n. And then square root of this whole thing is to be taken here, which is called as the RMS velocity. Actually, RMS velocity is the best measure of average velocities. The RMS velocity is the actual measure of the average velocity of all molecules here, not this mean velocity. Why? Because mean velocity can be zero also, because velocity is a vector quantity. तो velocity vector quantity होने की वजह से यहाँ पे C1 bar, C2 bar इनके directions, जिनके directions opposite है वो cancel हो जाएंगे and we can get a meaningless number, and that's why this mean velocity is not preferred here. But instead of that, the RMS velocity is preferred because it depends on all the velocities, and also it cannot be cancelled because the square of a number is never negative and it is always positive, and that's why there will not be cancellation here, and that's why this mean velocity is best way to calculate and be referred to. तो ये जो mean velocity RMS velocity जो है वही हम ज्यादा करके यूज करते हैं. mean velocity यूज नहीं किया जाता. It's of no use. Remember, it is just for the concept sake. बाकी हमको उसको यूज किधर भी नहीं करना है. ठीक है, ये अच्छी तरह से याद रखो. Okay, and then comes to the assumptions of kinetic theory of gases. In these assumptions, we are going to see all the assumptions, but remember that assumptions will not be so important, but उसके applications हमको important रहेंगे, जिसमें से लेकिन 2-3 assumptions जो है वो बहुत important है, समझने जैसे है. तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि सभी मॉलिक्यूल्स, एक गैस के सभी मॉलिक्यूल्स जो है वो आइडेंटिकल होते हैं, बराबर. तो ये हमको समझना है. अगर इफ यू हैव द मिक्सचर ऑफ गैसेस, 2-3 गैस अगर हमने मिक्स किए हुए हैं, तो उस केस में हम ये बात नहीं यूज कर सकते कि ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स विल बी सेम. ओके, तो मिक्सचर के अंदर द डिफरेंट टाइप ऑफ गैस विल हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट साइजेस, एंड that's why we cannot use that ये जो हमने kinetic theory of gases के ऊपर जो हम ये स्टडी करेंगे तो उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस जरूरी होंगे. ठीक है. दूसरी बात ये है कि the actual volume occupied by the molecules of the gas is very small than the total volume occupied by the gas. ठीक है, मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया वॉल्यूम एक अलग चीज होता है, और कंटेनर का जो वॉल्यूम है, मतलब गैस ने ऑक्यूपाई किया हुआ जो वॉल्यूम है वो अलग चीज होता है. सपोज दिस इज द कंटेनर and gas is just sprayed in this container,
and molecules are just moving here and there in this whole container. They are colliding with each other, and even they are colliding with the walls of container like this. So अभी molecules का जो volume है, तो वो अगर हम देखेंगे ठीक से, तो it will be very small like this. तो ये अगर सभी molecules को अगर हम इकट्ठा करेंगे, तो ये बन जाएगा molecules का volume, ठीक है, which is very very small as compared to this volume here. So molecules के द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ वॉल्यूम मतलब ये स्मॉल v इसको हम बोल सकते हैं, स्मॉल v. बट जबकि ये गैस के द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ वॉल्यूम मतलब ये कैपिटल V है यहाँ पे, दैट इज द कंटेनर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. गैस का वॉल्यूम मतलब कंटेनर का वॉल्यूम, और मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम मतलब अभी सपोज अगर सभी मॉलिक्यूल्स को अगर हम पकड़ पकड़ के अगर इकट्ठा करेंगे, या इन शॉर्ट इफ वी सॉलिडिफाई दिस गैस, देन दिस गैस विल जस्ट गेट सॉलिडिफाइड एंड अ टैबलेट विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस हियर. तो एक छोटा टैबलेट फॉर्म होगा जिसका वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कहलाएगा, जिसको हम स्मॉल v से डिनोट कर सकते हैं, which will be very very small as compared to the volume occupied by the gas as a whole. But we cannot use this in case when the container is very very small. Okay, that means if we have the volume of the gas very small as compared to the gas is suppose about to liquefy. तो अगर गैस इतना हमने भरा हुआ है, जैसे सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर के अंदर जब हम गैस भरते हैं, तो उस केस में हम देखते हैं कि गैस का जो है लिक्विड बन जाता है. दैट गैस इज इन दैट केस is so pressurized that it becomes a liquid actually, and in that case we cannot say that the actual volume occupied by the molecules. तो molecules के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है वो इतना बनेगा, और गैस के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है वो इतना बन रहा है. तो दोनों के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है. तो this volume occupied by the gas is molecules is not negligible as compared to the volume occupied by the gas as a whole in this case only. ठीक है, so ये हमको याद रखना है अच्छी तरह से. When high pressure is applied or low temperature is applied, in that case the volume this volume occupied by the molecules is not negligible, and that's why the gas laws are not obeyed in this case. Remember, तो गैस लॉज ओबे न होने का रीजन यही है एक्चुअली, कि जो गैस लॉज ओबे नहीं होते हैं एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, तो उसका बेसिक रीजन यही है कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स बिकम सिग्निफिकेंटली लार्ज एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस. एंड वन मोर रीजन इज दैट सी नॉर्मली क्या होता है कि द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स of the gas is very very small as compared to the force of attraction between the two molecules when they are in liquid or solid. तो solid के केस में दो molecules के बीच में बहुत ज्यादा strong attractive force होता है, लेकिन जब हम वही गैस में कन्वर्ट करते हैं, उसी solid या liquid को गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो दो molecules के बीच में force of attraction ना के बराबर होता है, मतलब होता ही नहीं है, because the distance between the two molecules is so large that there is no chance that the gas molecules will interact with each other unless until they collide, and the time of collision is very also very so small that the interaction is not possible at all, and that's why the gas molecules cannot exert the force on each other. Attractive force cannot be exerted by the molecules of gas actually, but this assumption also fails to hold when we keep the gas at high pressure. ठीक है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर. तो उस केस में क्या होता है, देखो ठीक से, गैस को अगर हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अगर करेंगे, तो उस केस में भी होता ऐसा है कि गैस को हाई प्रेशर किया मतलब वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा. जैसे ही वॉल्यूम कम होगा, तो इन दैट केस we cannot say that the molecules are too far away from each other, that the force of attraction can be neglected. No, there will be some force of attraction between the gas molecules in that case also. And even low temperature पे भी हम देख सकते हैं कि low temperature पे भी gas molecules जो है वो settle down होते हैं, and there is some force of attraction between the molecules of the gas in that case. And in that case actually the modified version of ideal gas equation is actually used, which is of the type, it is also called as a van der Waals ideal gas equation, which is of this type: P plus A upon V square into V minus B is equal to RT. This is actually the modified ideal gas equation, which is to be used when the pressure is high and temperature is low. Remember.
एक्चुअली क्योंकि इसका रीजन यही है, यहाँ पे ए और बी जो है दे आर जस्ट कॉन्स्टेंट्स, दे आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स विच आर टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली वो डिटरमाइन किए जाते हैं, एंड दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस. रिमेंबर द बेसिक रीजन, कंसेप्चुअल रीजन हियर टू टेक दिस v माइनस बी इज दैट, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है तो वो हमको इस्टीमेट करके इसमें से माइनस करना होता है, वही हमको गैस के द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ वॉल्यूम मिलता है. तो actual volume occupied by the gas will be actually the total volume of container minus something, some constant which depends on the volume of molecules of the gas. ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है वो उसका एस्टिमेट करके अगर हमने कम कर दिया, टोटल कंटेनर के वॉल्यूम में से अगर माइनस कर दिया तो तब जाके हमको ये एक्चुअल वॉल्यूम मिलता है. ओके, और P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर को यूज करने का मतलब प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर कहाँ से आता है, उसका रीजन यही है कि एक्चुअली प्रेशर जो है वो प्रेशर नॉर्मली अगर सपोज गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो जितना प्रेशर होता था, तो अभी तो अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि प्रेशर विल गेट इंक्रीज्ड स्लाइटली, and that increment is considered in this form here a upon v square, and that's why the pressure is found to be greater than the normal one. ठीक है, तो जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे ज्यादा हमको मिलता है, and this actually is the real gas equation. It is modified for real gases at high pressure and low temperature also. Okay. चलो ठीक है, so here we have seen all these concepts. Okay, so we can stop here today.